आज के लेक्चर में हम लोग लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस की बात करेंगे, क्योंकि हमको नेक्स्ट कुछ डिफिनीशंस लिखनी है जो कि जिसमें लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस का यूज हुआ है ना। रो रैंक क्या होती है, कॉलम रैंक क्या होती है, तो इन सब का वहां पर जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने इस लेक्चर में लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे, इनको डिफाइन करेंगे और इनके ऊपर जो रिजल्ट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, है ना। क्या होते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर? डिफाइन लीनियरली डिपेंडेंट हालांकि ये जो टॉपिक है इसको हमें वेक्टर स्पेस में डिस्कस करना था, बट हम यहाँ पर भी डिस्कस कर दे रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मान लो पता होना चाहिए कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। तो द वेक्टर्स, आई एम जस्ट सेइंग द वेक्टर्स v1 v2 and up to vn, v1 v2 up to vn are said to be linearly dependent if there exist scalars, this is a1 a2 an, not all zero। स्केलर्स हमको मिल जाए उनमें से कम एटलीस्ट एक नॉन जीरो हो, such that this a1 v1 plus a2 v2 and plus a3 v3 up to an vn, it makes is equals to zero. If we able to find a1 a2 and an such that at least one of them is non-zero and this linear combination makes equal to zero, in that case v1 v2 and vn will be linearly dependent vectors। Okay, or we can say also ki some finite vectors, are said to be linearly dependent if their linear combination can be made zero without taking all scalars zero। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो दिस इज अबाउट linearly independent sets। Okay, let's define the linearly independent set, independent vectors। So next definition, linearly independent
vector. So vector which are not LD will be called linearly independent Li vectors, है ना? So you can just say vectors which are not LD, it means linearly dependent. अगर वो linearly dependent नहीं है तो वो linearly independent कहलाते हैं, called Li. या अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है तो ऑल ऑफ द स्केलर्स मस्ट बी जीरो, सारे स्केलर्स जीरो होना चाहिए। वेक्टर्स v1 v2 up to vn are called linearly independent if whenever इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है, whenever this a1 v1 plus a2 v2 up to an vn is just equal to zero, it is possible only when all the ai is zero for some scalars ai is, then all of them is must be equal to zero. This a1 is equals to a2 is equals to an is just equal to zero. It means अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है तो इन दैट केस ऑल द स्केलर्स मस्ट बी जीरो, तभी हम उन वेक्टर्स को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, या यू कैन से आल्सो लाइक दिस कि there is the only possibility then all scalars should be zero. So some finite, you can also write like this and कह सकते हैं some finite vectors are said to be finite vectors said to be Li linearly independent if the only way to make their linear combination zero is to take all scalars जीरो, सारे स्केलर्स को हमको जीरो लेना पड़े, तो दिस सेट इज कॉल्ड लिनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, तो समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया, कोई भी चीज समझ में आई हो तो लेट मी नो। अंडरस्टूड द डेफिनेशन एलडी वेक्टर्स एंड एलआई वेक्टर्स। एलडी वेक्टर्स के लिए अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास जीरो हो एज वेल एज देयर इज वन एटलीस्ट वन स्केलर शुड बी नॉन जीरो, और एलआई के लिए हम उसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो कर ही नहीं पाए, अगर हम जीरो करना भी है तो ऑल द स्केलर शुड बी जीरो। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास अगर इनफाइनाइट सेट है तो उसको हम एलआई कैसे बोलेंगे, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हमको बोलना है तो एक और डेफिनेशन लिखते हैं।
अगर सारे सबसेट उसके एलआई हो, तो एन इनफाइनाइट सबसेट of V is said to be linearly dependent, linearly independent if every finite subset of S is linearly independent। तो अगर इनफाइनाइट सेट है उसको हमें एलडी या एलआई बोलना है, तो उसका हर एक सबसेट, हर एक फाइनाइट सबसेट शुड बी एलआई इंडिपेंडेंट। Otherwise it will be called LD। Okay, so these are definitions. Let us see some results based on the LD and LI vectors। पहला रिजल्ट ये है कि जो इम्पटी सेट है इसी डिफाइंड एंड इंडिपेंडेंट सेट है ना। जो इम्पटी सेट होता है इसको एलआई सेट बोला जाता है। ठीक है, जो इम्पटी सेट वो डिफाइंड है, तो द इम्पटी सेट इज डिफाइंड टू बी, वो डिफाइन करा गया है कि उसको हमको एलआई ही लेना है ना, लिनियरली इंडिपेंडेंट लेना है। लिनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, दूसरा रिजल्ट लिखते हैं। A set containing a set containing only the zero vector। ठीक है, तो इसको हमें एलडी लेना है। अगर जीरो वेक्टर ही है उसके अंदर, इज लिनियरली डिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट, a set containing only a non-zero vector is linearly independent। A set containing only a non-zero vector is linearly independent। linearly independent है ना। Two vectors are LD if and only if one of them is a scalar multiple of other। तो अगर हम दो वेक्टर्स को LD कह रहे हैं तो इसका मतलब वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल। तो टू वेक्टर्स आर LD if and only if
one of them is a scalar multiple of other. Fifth, a set is containing null vector is linearly dependent. अगर किसी भी वेक्टर सेट है उसके अंदर जीरो वेक्टर अगर आ गया तो हमारे हमेशा वो जो सेट होगा वो एलडी होगा। ठीक है, तो a set which contains set which contain the null vector contain the null vector is linearly dependent। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं that every superset of a linearly dependent set is linearly dependent। every subset of a linearly independent set is मीन दैट कि हमारे पास अगर एलडी कोई हमारे पास सेट है तो उसका अगर सुपर सेट कुछ भी है तो वो हमारे पास एलडी ही होगा। बट अगर हम एलआई कुछ हमारे पास सेट है तो उसका अगर हम सबसेट लेते हैं तो वो एलआई होता है। तो एवरी सबसेट ऑफ अ लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लिनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं इफ अ वेक्टर v is a linear combination of vectors v1 v2 up to vn, then the set जिसमें v इंक्लूड कर लो, है ना, ये v1 v2 vn तो था ही, साथ में हमने v को भी इंक्लूड कर लिया, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर्स। तो ये जो भी सेट बनेगा वो हमारे पास एक एलडी सेट होगा, लिनियरली डिपेंडेंट। तो दिस इज v वेयर v1 v2 अप टू दिस इज vn। तो इसमें एक भी ऐसा हमारे पास वेक्टर पड़ा हुआ है दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स, इन दैट सेट विल बी एलडी, is linearly dependent। क्लियर, नेक्स्ट रिजल्ट पढ़ते हैं दैट इज योर इफ द सेट v1 v2 अप टू vn सेट है वो li है, इज लिनियरली इंडिपेंडेंट।
एंड द सेट जिसके अंदर हमने एक हमने वेक्टर इंक्लूड करा, दिस इज v1 v2 अप टू vn, और इसके अंदर हमने v1 इस वेक्टर डाल दिया, और अब ये सेट तुम्हारे पास LD बन गया। तो 100% श्योर है कि जो v है दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर, अदर v1 v2 एंड vn वेक्टर, है ना। क्योंकि अब हमारे पास ये सेट क्या बन गया है, LD बन गया है। पहले v1 v2 अप टू vn जो है वो Li वेक्टर था, है ना। तो then this v is a linear combination the linear combination of the vectors v1 v2 up to vn। ओके, तो द सेट, ये तो हमारे पास नेक्स्ट लेट अस सी the set of non-zero vectors, there is no one is zero, non-zero vectors v1 v2 up to vn is LD, is linearly dependent if and only if one of the vectors VR, है ना, and this R must be greater than 1, है ना। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास सारे के सारे नॉन जीरो वेक्टर्स है और वो linearly dependent है, in that case there exists one vector that is the linear combination of the preceding vectors, है ना। कहीं पर किसी स्टेज पे जाके एक वेक्टर मिलेगा जो पहले वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन का वेक्टर होगा, है ना। तो इफ एंड ओनली वन ऑफ द वेक्टर्स वी आर वेयर आर इज नॉट फर्स्ट वेक्टर, उसके बाद सेकेंड नंबर थर्ड नंबर इस तरीके से हम देख पाएंगे, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन is a linear combination preceding vector, उससे पहले वेक्टर्स का वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा अगर ऑल द वेक्टर्स आर द नॉन जीरो वेक्टर। ओके, तो आई होप कि ये रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द linearly डिपेंडेंट एंड linearly इंडिपेंडेंट सेट्स एंड डेफिनेशन समझ में आई होगी। ओके, तो अभी हम लोग जो है मीटिंग इन करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे रो रैंक क्या होती है, कॉलम रैंक क्या होती है, इन सब के बारे में। ओके, तो मैं मीटिंग को इन कर रहा हूँ और आप लोग नेक्स्ट मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए।